Hello Rahul, before you start, please tell me the subject name and the company name you are preparing for. Uh, the subject is fluid mechanics and the main name is MRPL. Okay, so my first question to you, what is Pascal's law? What is Pascal's law. Pascal's law? Yes. So, Pascal's law said that the net force on net force on a body will be the equivalent of some of the forces on that body. There will be some equivalent force. Net forces would be equivalent to? हाँ Some इतने of the सालों. forces that is acting on that body. Pascal's law. I think a force by area we use to drift some objects like car. I'm not able to recall at this time. अच्छा ठीक. अच्छा गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है? Gas pressure is basically the difference between the pressures, and absolute pressure is the exact pressure. So if we say the pressure that is acting on the body, that will be the difference of the actual pressure minus the atmospheric pressure. So that is like gauge pressure. And if we consider the absolute pressure, then that will be the sum of atmospheric pressure plus the gauge pressure. So that will give the actual pressure. नहीं क्लियर नहीं हुआ और एक बार बताइए क्या है डिफरेंस क्या है दोनों का? Gauge pressure गेज is the प्रेशर. difference between the actual pressure minus the atmospheric pressure. And so basically gauge pressure is the difference. But when we say about the actual pressure, it means this will be the sum of gauge pressure plus the pressure that is acting. अच्छा ठीक है. बर्नौली क्वेश्चन क्या है? Bernoulli equation is basically used when we are passing the fluid to the pump or the one. So it basically says that uh, at at a at a streamline, in a streamline we can say. So meaning at 2 points in a flow, the sum of pressure energy, potential and potential energy, and the mechanical energy, the sum of these will remain the same. And the sum of the energy at one point will be equal to sum of the energy at another point, basically. अच्छा क्या क्या है इसका एजम्पशंस क्या क्या है? Assumption है rotational flow and no eddy formation and only हाँ, हो गया. other assumption I'm not able to recall sir at this time. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फुल्ली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है? Fully developed flow, when we say about in the laminar flow, so in laminar flow, the liquid will, all the the particles of the liquid will flow in straight line only. So that means there will be no eddies formation, and it will be the flow will be uniform. So that is called the fully developed flow. And ठीक है. टर्बुलेंट कैसे? turbulent, हाँ टर्बुलेंट लेमिनार बताया ना आप अभी. yes sir. टर्बुलेंट बताइए. Turbulent, the velocity will be अच्छा बाउंड्री लेयर क्या turbulence, होता है? बाउंड्री लेयर बताइए पहले. yes sir. The boundary layer works on the no slip condition. So basically, at the side of the ball, uh,
the velocity of the fluid will be zero. So that's why it form a certain region where uh, the velocity of the fluid will be deaccelerating. So that's why this form the region. That region is called the boundary layer. And in turbulent flow, that boundary layer region decreases. Basically. क्या क्या आपका आवाज वॉइस As क्लियर नहीं आ well. रहा है. अच्छा, अच्छा. So sir, I will change this mic. I think. चेंज करिए. Give me the time. So are you getting my voice now? बोलिए. So the boundary layer region that is formed due to the no slip condition. Are you getting my voice? Hello. बोलिए. सुनाई दे रहा है, बताइए. हाँ. So yes sir. So at the ball the fluid will have the zero velocity. So that's why it's formed some region that in that region the flow will be deaccelerating. So the velocity will be different from the free stream velocity. So in that region, where this deacceleration of the fluid is occurring, that is called the boundary layer, and this region will be small in the turbulent flow, and in the laminar flow it will be more. So there will be also some entrance length. So that entrance length will be bigger in laminar flow, but it will be smaller in turbulent flow. अच्छा, Yes. ठीक है. अच्छा, मुझे पंप और टरबाइन के बीच में डिफरेंस बताइए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड टरबाइन? So, pump is basically converting the mechanical energy into the pressure energy, but in turbine, that is converting the pressure energy into the electrical energy. Basically, the conversion of energy is opposite in both the cases. अच्छा, तो इस पंप इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस और एनर्जी ऑब्जर्विंग डिवाइस? Energy absorbing device. Basically, it take electrical energy, and that electric energy will be converted into the mechanical energy, and then finally it produces the pressure energy for the fluid that is flowing into the pipes or अच्छा, ठीक है. फैन और ब्लोअर के बीच में क्या डिफरेंस है? um, and basically the difference is the मतलब pressure का difference रहता है. The fan will be having the less pressure, but the blower basically send the air. Blower we use in our rooms to whenever there will be some smoke or something that we can eject it out from the room. So in that case we रिफाइनरी are में ब्लोअर using कहाँ पर यूज blower, होता but है, पता है? रिफाइनरी में ब्लोअर कहाँ पर यूज करते हैं? industry में blower कहीं एग्जांपल बताइए ब्लोअर का, कहाँ यूज होता है? industry में blower use होता है. So I don't know at this time. ठीक है. ब्रेक हॉर्स पावर और वाटर हॉर्स पावर पता है आपको? Brake horsepower or water horsepower. I don't know sir at this time. Brake horsepower. एनपीएसएच क्या होता है पंप का? NPSS is basically the net head that is required to flow the fluid into the pump. So it will be the pressure that is given minus the atmospheric pressure. Sorry, हम्म. vapor pressure of the load.
अच्छा and the other head also comes into picture. ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, ये क्यों करते हैं इसको, मतलब वो तो बताइए एनपीसीएच क्या This है। is basically requires this is basically required for the cavitation. If the vapor pressure of the liquid will be uh, more than more than the pressure that is given to the system, then the cavitation occurs that will produce the wall that will decrease the efficiency of the pump. So that's why we need this term NPSL. So whether the cavitation will happen or not. अच्छा ठीक है, तो एनपीएसएच कैसे बढ़ाएंगे आप, बढ़ाना होगा तो हाउ टू इंक्रीज एनपीएसएच अवेलेबल। NPS is basically increasing the pressure that is given by the pump, and we can also put the pump at a higher height if the पंप को हाई if रख the देंगे, destined पंप को हाई रख देंगे तो कैसे एनपीएसएच बढ़ेगा, बताइए थोड़ा। it depends कि अपना source कहाँ पे है. If the source is uh, if the sorry, uh, if the place where we want the flow of fluid that is at the lower position, then if we put the pump at higher position and to produce the more ठीक है, चलिए हम NPSH. आपको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. But 15 हम्म, minutes we need to नहीं नहीं, ये आपका 10 मिनट ये होता है, 5 मिनट फीडबैक होता है, 15 मिनट की डाले इसका, नहीं तो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा. हम्म. पैस्कल्स लॉ सर नेक्स्ट टाइम ऐसा ये, भी कर सकते हैं कि बिना रिकॉर्डिंग के भी कर सकते हैं. नहीं नहीं, जो और नेक्स्ट टाइम ये है भी. इसका जो जनरल स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, यस करते सर. हैं जो भी है ना। पैस्कल्स लॉ, आप सही से सब जो लॉ वो है, सब ये सब सही से उसका स्टेटमेंट देखिए, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है ना। ऐसे ही कुछ यस भी सर. बोल देंगे तो नहीं होगा ऐसे। और एक यस आंसर नहीं, कोई सा आंसर में आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा है, एक आंसर में भी यस क्लैरिटी सर. नहीं आ रहा, मतलब हाँ कोई सा आंसर मतलब, या तो प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, या फिर आप सही से उसको समझे नहीं है, क्या है जो भी है। ठीक है, एक्चुअली तो ये सब बहुत पहले पढ़ा था तो नहीं ध्यान ठीक है, नहीं तो आपको मॉक देने के लिए तो दो तीन इसी दिन बात. टाइम मिला था ना आपको, तो मैं तो बता दिया था आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसके लिए, है ना। कम से कम यस. इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़िए पढ़िए, सब तो बता दिया था मैं आपको। और इम्पोर्टेंट जो लॉज है, लॉज तो स्टैटिक्स फ्लूइड स्टैटिक्स में दो चार ही लॉज है। हम्म, यस. तो वो तो पढ़ना था आपको। ठीक है, तो ये लॉज जो भी है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो गया, पैस्कल्स लॉ हो गया, दो चार लॉ है स्टैटिक्स का, पढ़िए क्या है वो। ठीक है, यस सर. फिर गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव में इसको मेजर किया जाता है, वेरिज एब्सोल्यूट यस सर. प्रेशर वैक्यूम के रिलेटिव में इसको मेजर किया जाता है, सिंपल। ये माइनस वो होता है, वो माइनस ये होता है, ये आंसर नहीं है। एब्सोल्यूट प्रेशर ठीक, जो है वैक्यूम. वैक्यूम के ऐसे क्या रिलेटिव में। बोले सर एक बार. अच्छा गेज प्रेशर वी मेजर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर. whereas तो absolute pressure is पास्कल लॉ measured। जो बताया था. हाँ, तो सर जो पास्कल लॉ बताया था वो पास्कल्स लॉ सर बताना सही होगा। बताया था. नहीं, पास्कल्स लॉ तो आप, हाँ. पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ एक तो कन्फाइंड फ्लूइड है, वहां पर हम लोग जब प्रेशर अप्लाइड करेंगे, है ना, यस सर. वो स्टैटिक फ्लूइड में, तो जो यस ट्रांसमिट सर. होगा वो फोर्स, वो प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा हर जगह में सेम अमाउंट में ट्रांसमिट होगा। The pressure यस सर. applied to a confined fluid increases the pressure throughout by the same amount। ये है, ये बोल रहा है उसको। ठीक है, उसको ओके. फंडामेंटल देखिए क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सर है एक ना। बार पढ़ लेना. यस. पढ़िए, आपको टाइम तो दिया गया ना, एक तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया जा रहा है इसमें। यहाँ पर अगर, यहाँ पर तो आपको बोल के आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, क्या प्रिपेयर करके आना है, वहां तो आपको कुछ ही पूछ कर रैंडम। ऐसा नहीं यस कि सर. ऊपर सीरियल वाइज आपसे थर्मो पूछ लेगा फिर फ्लूइड पूछेगा, ऐसा तो सीरियल वाइज जाएगा नहीं वो, है ना। नहीं होगा. तो यहाँ तो आपको 3 4 दिन पूरा टाइम लेके ही आप एक मॉक दे रहे हैं, तो आप इसका तो फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर बोल पाएंगे तो वहां तो डेफिनेटली बोलेंगे, यहाँ नहीं बोल पाएंगे तो वहां तो बोलने का चांसेस और कम हो जाएगा, है ना। यस. फिर बर्नौलिस, बर्नौलिस इक्वेशन क्या बोल रहा है उसका, बर्नौलिस इक्वेशन ऐसे नहीं बोल रहा है कि एनर्जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऐसे नहीं बोल रहा है।
वो Yes. टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, वो बस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करता है, सब एनर्जी के बारे में बात नहीं करता है। Yes. ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन देखिए क्या है, उसका एजम्पशंस क्या है ना। इरोटेशनल सेकेंडरी उसका एजम्पशंस है। कुछ निकालना होगा तब Yes. देखे जाएगा। उसको पहले Yes. देखते हैं हम लोग, विस्कस इफेक्ट्स नेग्लिजिबल होता है। विस्कस Okay. इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इनर्शियल, ग्रेविटेशनल एंड प्रेशर इफेक्ट्स। Yes. Okay, basically we are considering three forces, that is inertial, gravitational and pressure effects. इसलिए आप देखोगे Yes. P by rho g plus B square by 2g plus H. These Yes. three are that forces we are considering here. Yes. और क्या यहाँ देखते हैं हम लोग, the sum of kinetic energy, potential energy and flow energy of a fluid particle is constant along a streamline Yes. during a steady flow. Flow भी steady होना चाहिए। ठीक है, Yes. फ्रिक्शनल इफेक्ट्स यहाँ पर हम लोग नेग्लिजिबल कर रहे हैं। ठीक है, Yes. फुल्ली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, अब ये बाउंड्री लेयर सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, Yes. यहाँ इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाउंड्री लेयर, लेकिन आप आपको पर्सनल के लिए है ना, पर्सनल एक लर्निंग के लिए पूछ दिया गया है तो पता नहीं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फ्रॉम Yes. रिफाइनरी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ जानना जरूरी है इसको भी। कहीं और इंटरव्यू में क्या है कैसे है। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो ये बोल रहा है कि जहां पर आपका वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप्ड हो गया है, फुल्ली डेवलप्ड हो गया, उसके बाद आपका वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं होगा उसके बाद। Yes. ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल Will निकाले होंगे आप, है ना। yes, sir. तो इतना तो पता होगा, तो उसके बाद स्टार्टिंग में बहुत सारा इफेक्ट आता है, वो वाल इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आएगा, वो ये बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो वेलोसिटी प्रोफाइल जो है चेंज नहीं होगा, या टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज नहीं होगा। वो पॉइंट से हम लोग फुल्ली डेवलप्ड बोलते हैं। उससे पहले जो होता है उसको क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, ट्रांजिशन लेंथ बोलते हैं उसको। याद आ रहा Yes, sir. है ना। आ रहा है। हाँ, Yes. तो बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर जहां पर विस्कोसिटी का इफेक्ट्स जहां तक है वो बाउंड्री लेयर है। जहां तक वो विस्कोसिटी का इफेक्ट्स जहां पर प्रीडोमिनेंट है, उसको Yes, sir. वहां तक वो बाउंड्री लेयर ही आपका होगा। उसके बाद आपका कुछ बाउंड्री लेयर का मतलब वो फेल्ट नहीं होगा, कुछ भी जो भी है, फ्लूइड एक Yes. फील नहीं करेगा कि बाउंड्री लेयर है वहां पर, बाउंड्री का जो उसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, Yes. और Yes. ऐसे पंप टरबाइन डिफरेंस, ये आपको देखिए इक्विपमेंट तो पढ़ना ही है इसमें, जो भी है, पंप है, फैन है, ब्लोअर है, ब्लोअर कहाँ लगता है, जैसे कि आपका हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर कंबस्टर हो गया या फर्नेस हो गया, वहां पर क्या है, हम लोग अगर कुछ वहां पर Yes. जल फायरिंग कर रहे हैं, तो फायरिंग के लिए एयर चाहिए, है ना। Yes, sir. एयर चाहिए, तो एयर कहाँ से आएगा आपको, एयर कहीं एक Blower. उसमें हम देंगे कहीं, ब्लोअर से चला के एटमोस्फेरिक से ब्लोअर चलाएंगे, खींचेंगे उसको, सक सक करके यहाँ पर देंगे एयर, है ना। Yes, sir. हाँ, तो इस ये यूज है उसका। ठीक है, रिफाइनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब चीज, ये फंडामेंटल चीज है इसमें। ठीक है, Yes. ओके। तो सर ब्रेक हॉर्स पावर और उसमें क्या कहते हैं हॉर्स क्या, पावर, दो टर्म बोले थे ना सर, ब्रेक हॉर्स पावर और एक और हॉर्स पावर, अच्छा हाँ, उसका ब्रेक हॉर्स डिफरेंस। पावर ना, ब्रेक हॉर्स Yes. पावर क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर इज द पावर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द पंप थ्रू द शाफ्ट। पंप को जो हम लोग Yes. पावर दे रहे हैं वो बीएचपी है, और जो फिर पंप जो फिर वाटर को जो दे पा रहा है वो डब्ल्यूएचपी। ठीक है, Okay, sir. इसीलिए तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो इसीलिए लेस देन 1 होगा ना, जो हम लोग एफिशिएंसी को टू क्या है, वर्क हॉर्स पावर बाय ये वाटर हॉर्स पावर बाय ये आपका ये ब्रेक हॉर्स पावर, है ना, यही Yes, sir. एफिशिएंसी है बस। Yes.